जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे बाकी संगत तक पहुंच सके और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। आपको तो पता है हमारे गुरुजी को शुक्राना करना कितना पसंद है। संगत जी, आज हम 2 आंटियों के सत्संग सुनाने जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरुजी। I came to Guruji in '97. After a lot of resistance, a friend of mine had brought me to Guruji. It was September and it was Thursday evening, 6 o'clock. And Guruji was sitting on his gaddi on his own. So when I was getting married in '88, my mother had warned me that तेरी शादी इंडिया में हो रही है, तो तू ये गुरु के चक्कर में मत पड़ना. So I was conditioned in that way not to believe in gurus and pandits and Babaji. So I was very resistant and I was a total non-believer. But in '97 I developed a skin ailment which was very grave in nature, very serious. And also since I moved to India in '88, after having been born and raised in England, I developed very chronic asthma, and though I was born with asthma, but the changing season in India, in Delhi, with the pollution and the changing season, had precipitated it. So it would get triggered off, which would send me to the ICU, and I would be on steroid injections and subsequently steroid tablets for weeks and sometimes months on end. So you can imagine the quality of life had totally deteriorated. So in '97 I had my worst attack in March, again the changing season, where both the doctors in the nursing home had looked at me while they were administering steroid injections, and they felt it was a very hopeless case. So they exchanged a look that said that I don't think she will survive this attack. So through some miracle, because I had to come to Guruji, I guess, through some miracle, I survived the attack. And then in September, when I was compelled to come to Guruji with a friend who was a staunch believer of Guruji, I simply felt that I had been a lost child who found its mother. I really felt at home at the first sight. And you can say it was love at first sight on meeting Guruji or faith at first sight, but I truly felt at home. The truth has its gravity, and there was no denying that Guruji, कोई ऐसे वैसे Guru, Pandit or Babaji नहीं थे. He was, even now we cannot measure him in words. अभी भी अगर हम quantify करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि गुरुजी कौन थे, तो I think words will fail us. But ये faith जो होता है anyway comes from the heart and not from the mind. Where faith begins, logic has to end. So this is what happened with me. My logical mind stopped working, and my heart simply felt the love, felt his compassion, and it was totally assimilated in his grace. तो गुरुजी ने सिर्फ इतना ही बोला था कि तू रोज आया कर, और मीटिंग में एट फर्स्ट साइट से तू रोज आना है. दिस वाज हिज हुक्म. रोज आना के मतलब उन दिनों में एम्पायर स्टेट में वो 7 दिन बैठते थे गुरुजी, और 7 दिन लंगर लगता था. सो आई यूज्ड टू कम एंड ही न्यू आई वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन with my health and with my relationship, my personal relationship, my matrimonial marital situation was very, very serious too. So he said to रोज आना, क्योंकि यहाँ जो शब्द होता है, सत्संग होता है, लंगर होता है, and जो मेरे पास बैठना होता है, वो सब
everything has healing powers. So collectively, I was getting healed by these four elements put together. And ये समझना बहुत मुश्किल है, because I remember I was having another asthma attack, and this happened while I was sitting there in the sangat, and he said, "Tu langar kha." I said, "Guruji, I need my hospital right now. I need my oxygen. I need steroids, and I need to leave." And while I was choking on my own words. I was totally suffocating, and I said, "Guruji, I can't sit here." He said, "Nahi, tu langar khana hai." Now it was very hard to fathom for me that, Guruji, who was meant to be so compassionate, could not understand that I can't breathe. I was really suffocating, and I was gasping for breath, and I needed only steroids at that point, steroid injections. And he said, langar steroids hai. And ye chapati nahi hai, दाल नहीं है, ये ऑक्सीजन है तेरा, ये तू खा, तेनू समझने की लोड़ नहीं है, बस खा ले तू. So with one langar, of course I was arguing with him telepathically, say, what kind of guru are you? You do not understand my misery, and how can you ask me to eat? Asthmatics will understand that you cannot drink water at the time of attack, so let alone eating food. But anyway, forcefully I consumed whatever I could. And he said, "Ja Ram kar, kaja ke Ram na so," which was totally unbelievable to my ears. I just felt, how could I possibly sleep restfully? I know I'll go home, and then after maybe a while, I will end up in the hospital, in the ICU, as customarily I would do. And, but, of course, such were his ways. I slept blissfully. I thought it was a coincidence. Subsequent changing seasons came and went. And my asthma was totally gone. So that was October 97. And then a few months went by, and Guruji had said कि तू श्रद्धा में पास होगी. He called me from the satsang, and he said, मैं तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, तू श्रद्धा में पास होगी. Down I made shakal देखिया. Now Guruji knew that I would avoid my inspection because from top to toe I was covered in blood, and my face was inflamed as well as deformed. So I would say to Guruji, "Guruji, मैं आपको कैसे पता कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखती हूँ आईने में?" He said, "मैं गुरु में सब पता होता है." Now Guruji is and was at that point, and always will be, he is omnipresent, and he is so omnipresent that he proved it to me time and again. This was just one time, but there were many subsequent occasions when he would relate something, some conversation I've had at home, or some incident at home, and he would relate it to me on meeting him. He said, "Mainu sab pata hai, tera skin cancer theek pata hai." Now, had he told me I have skin cancer months before, I would not have survived it, because it was a very daunting thought. I knew that it was not eczema, I knew it was not psoriasis, it was very ugly, and my skin was very unsightly, which made me look very unsightly, and it would make people avert their eyes on looking at me. And if I tried to eat something, my skin would crack. And then he would say, "Tu skin cancer theek hai, biopsy kara le bishar." Biopsy was confirmed, but by that time it already blessed me. So my skin miraculously, from red turned to pink, and from pink it became totally normal, with no blood, no inflammation, within weeks of him blessing me. So that was the second miracle. And then of course he used to say, and he used to emphasize the fact कि एक बारी तुसी इत्थे आ जाओ और नाम दे नाल जुड़ जाओ. तो फिर अस्थमा की, कैंसर की, hole in the heart की, eczema की. I was born with hole in the heart and eczema, but that also Guruji took care of. Now my skin is as clear as day. There's no blemishes. There's no inflammation. With his grace, in fact, my skin is better than it ever has been, and even before I had this skin ailment. And he's truly given me a new skin. He's given me a true life, and a new life. And he said to me after he healed me of skin cancer, "It 2 December 97 with Marjandi." Now this claim corresponded with an astrologer in the same year.
गुरुजी के आने से पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी एंड उन्होंने भी जब हॉरोस्कोप पढ़ा मेरा विद माय डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, ही सेड कि तुम्हारी तो कोई लाइफ नहीं है दिसंबर 97 के बाद, एंड गुरुजी हैड रिलेटेड द सेम। तो वो तो सचमुच अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। He's omniscient, omnipresent, he's omnipotent. He's everything. And from being a total non-believer to becoming a believer is also his grace. In becoming an absolute believer, I am convinced today, after 14 years of coming to him, that and maybe many lifetimes before this search was on, and now the search is over because I have met maybe what my soul was looking for many, many lifetimes. I feel that Guruji has truly drives the vehicle of my life. He is my driving force. He is the wind beneath my wings in the true sense. And as he used to say in his words, to surrender kar do kabhi. And to surrender, you cannot possibly use your rationale. You cannot use your logical mind. आपको सिर्फ मानना है। He used to say, मांगो नहीं मानो। तो मांगो नहीं क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आपके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा है। हम मांग लेते हैं छोटी छोटी मटेरियल चीजें जो एवरीडे चाहिए होती हैं, whether it's a car, whether it's a job, whether it's a school admission, the list is truly endless. पर हमें ये नहीं पता कि असली चीज क्या है और हमारे लिए क्या अच्छा है। वो तो वैसे ही मिल जाना है। When one member of the family starts coming to Guruji, entire family, I would say the entire neighborhood, people you come in contact with, they all get blessed. And you get what you need. So he protects your children, he protects you, he protects your spouse. Sab kuch gets aligned. Basically, I believe in my thinking and in my understanding, I believe that your life gets aligned, and jo hame 5 saal, 10 saal pehle bhi the desire we had in our hearts, and we would hope that it would get fulfilled, somehow through a deep understanding or deeper understanding and through spirituality, we realize, oh thank God that prayer was not answered because aaj mujhe jo nahi mila main bahut khush hu because I didn't need it. There's a very fine line between need and want. The wants to hang endless. There's no, we can't quantify our wants. But needs, he knows what's good for our soul, what's good for our life, what's good for this janam, this lifetime, as well as the subsequent lifetimes. And therefore, it's a journey. It's a journey which gets facilitated with Guruji's grace, with his unmeasured blessings, because the blessings do become unmeasured when you become aware that Guruji is the one who is there holding your hand and carrying you through. And on the subject of karma, he used to say कि कर्म से कट नहीं है तुसी, you have to go through your karma. ये कर्म है, skin cancer, asthma, maybe deep relationship karma, maybe financial karma. There's 3 reasons why people actually initially start coming to Guruji. It's always some kind of karma which is stuck, or which is very deep, and we feel trapped in our situation. It could be that we're not progressing at work, we're not progressing enough to secure its financial, empowerment. So therefore, we feel totally immobilized, and we feel that we're totally trapped in the situation. So basically it could be financial, relationship, where we feel that no matter what we do, things are not working out. Or it could be health issues that, we're constantly falling sick, or we're constantly attracting negativity. When we come to Guruji, first of all, he gives us the strength to endure our karma. Karma to kaatna hai. So he gives us the strength. He gives us that inner empowerment. In my case, I remember I came in a very dire situation, and my whole world was crumbling around me, from my health to my neglecting my children because of my health. Everything was a chain reaction, and my marital home being totally affected. And I was truly broken. My spirit was broken when I came to Guruji, and as I said, I did not believe until I saw him.
just at first glance, I knew that he is much more than my human mind can comprehend. And his larger-than-life aura, his magnificence, as well as his magnanimity, and his grace, and his compassion, and his smile, everything just drew me there every evening, effortlessly. And I just knew that Guruji is going to take care of my life. I knew, in the same token, in the same breath, I knew I had to go through my karma. And he used to say, Karam, तुसी करो अपने, जो पिछले जन्म के हैं, वो तक कटने में, and I will facilitate. Maybe he reduced the intensity. He reduced the intensity of the karma. And he gave me acceptance to endure that karma. So the inner peace started permeating and the acceptance of that karma, which was very important. He said, "Pehले karam theek karo. Is janam ke karam ko theek karo. What you're suffering is a consequence of maybe past deeds. But from now onwards, live with heightened awareness. आप समझो आप क्या कर रहे हो, समझो क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, and what you're doing. Because karma works on 4 levels. What you think, what you speak, what you feel, and what you do. So be aware कि कोई negativity नहीं होनी चाहिए. Have total and absolute faith. And love your Guruji. Because Guruji ke bina, I mean, there's so many shabads which again confirm this truth. कि Guru ke bina तो हमारी चल ही नहीं सकती गाड़ी. And he takes care of every morsel, every molecule of our life. And he came to uplift humanity. He came to bring mankind back onto the right path. And without him, we were all led astray. We have gone astray, we have been led astray, and since he's been in our lives, there is hope, there is a promise, and there's a balance. I think there's a balance between the spiritual and the material, which he used to say is very, very important for a healthy living and for a meaningful existence. I will share my latest satsang with you, which is again health karma. Recently, about a month ago, Guruji, before he left his physical body, he said to wapas London chale ja. Now I couldn't relate to that because I was very, very happy in India after my divorce, which he blessed in 2006. I was very happy and I had rebuilt my life. I'm a calligraphy teacher and artist, as well as a writer. So I was very comfortable and set in my ways here. And suddenly he said, "Tu wapas London chale ja." So which really shook my ground. And I felt that how can I now rebuild my life in England? I have no work there. I have very little family there. And I certainly don't have the Sangat there. And I don't have Guruji's temple there. So there's a lot of void, a big vacuum. And a lot of uncertainty. But last year, Guruji created the circumstances for me to go back. My mother was taken ill. So I didn't even bat an eyelid. And both my daughters are now in university abroad in the US. So really there was no reason for me not to go back. The Guruji had created the circumstances and I had gone. Now he knows why he sent me. We do not know the bigger picture of why he tells us to do certain things. We all are very short-sighted, I would say. And we have a myopic view of our situation and, the world at large. So he said, "Tu chale ja." So I went last year and I was quite miserable when I reached there for many months. And then, miraculously, I found Guruji's Sangat 10 minutes from where I live. Just 10 minutes. So I then got in touch with them, connected with them, and then we, this year in January, did a satsang in my mother's house. And that satsang was actually for my mother because she also melted and she became receptive with his grace. जब गुरुजी की मेहर होती है तो पूरी फैमिली आती है, पूरी फैमिली मानने लग जाती है गुरुजी को, because the सच्चाई है that will pull you towards it. You're bound to gravitate towards truth at some point in your life.
So mom melted and she was so receptive. She said, "Ha, ye to asli hai," which she had already admitted many years ago after I got cured from my skin cancer. But now she was absolutely elated. So unke ghar mein hi ho raha hai satsang. And she felt healed, you know. At some level, of course, Guruji is protecting her, healing her. She was diagnosed with pulmonary fibrosis last year, and that's why I rushed back to England to live with her, to settle down. And though it was not my ideal home anymore, I knew I was doing the right thing. I was doing what Guruji wanted me to do. And when I found the Sangat there, it became a home. And I was comfortable there. And I looked at things positively. Okay, I have two homes. I have one in India and one in England. So what more could I ask for? So, Guruji has blessed me with two homes now. And I shuffle between the two. And this year, what happened though, coming back to my satsang, I felt sick. Though I didn't visit a doctor, I knew I was very tired when I moved to England, very fatigued, I was dragging my feet. Everything was a effort. So I came to India anyway, in Jan. I moved there last August. I came back this year, in 2011, in Jan. And Guruji made me do a lot of satsangs. Every day there was a satsang in somebody's house or the temple. And then I understood internally that Guruji is healing me from something. There were very real symptoms. One of them was sleepiness, constantly feeling lethargic, sleepy, and very, very tired, very fatigued for no rhyme or reason. So then I went back to England, and then again for Shivratri I came back end of February this year. And this time the satsang grew by leaps and bounds. Everywhere I would go, I was very drawn to the temple, satsangs in people's homes, and speaking incessantly about my experiences with Guruji. And again I felt, okay, instead of going to doctor, I know that Guruji is healing me, so let it be. And then came April. I've been here since, as I said, end of February. It's been a long trip, and now we're sitting on June. So in April, I couldn't take it anymore. And during that time, somebody said, go to Kuwait for 8 days. You do satsang there. Again, it was Guruji's message. So I went, dragged my feet to Kuwait, did satsang 3-4 times a day, literally for breakfast, lunch, high tea and dinner. And in different people's homes. And again, by 10:30 in the night, I would be absolutely exhausted. And I'd be bloated, and I'd get a lot of pain in my stomach. Then when I came back, I finally had to go for my ultrasound because I couldn't take it anymore, the pain and the discomfort. So then they found that there are fibroids in my uterus, and there was some other growth. And then the gynecologist said, we will have to remove your uterus right away. We can't delay this because there's a lot of growth and it's a rapid growth. I said, fine. So May 2nd, last month, I had my uterus removed, and because it was laparoscopic, they discharged me 1 day later. Now, on discharging me, 2 days later, I got this excruciating pain which sent me back to the temple and to the hospital. So then I was admitted in hospital, and this time I couldn't take the pain. So they said, well, we can't relate to the surgery because the surgery was successful. The laparoscopic hysterectomy was successful. So we don't know what to attribute this pain to. So again, they did tests. And in 3 ultrasounds in 1 week, which they did, it was showing the same results. I had stones in my gallbladder, I had a blocked bile duct, and I had some sludge in the liver. So fair enough, so now I just had a laparoscopic hysterectomy, and now they suggested I have another surgery. Now the surgery would remove the gallbladder, and another procedure was meant to be done where they would clear the bile duct. Now, I was very dispirited, as you can imagine. First of all, I'm back for holiday. I'm here just visiting Delhi. And second,
Excuse me. Secondly, I was not prepared to go through another surgery so rapidly within such a short span of time. So it was a Thursday evening, and Sangat came over to see me, a few people from the Sangat. And they brought this cake with them. And I was not interested in consuming the cake, so I just rejected it. And the Sangat said, "Nahi, aap thoda sa kha lo, ye Guruji ka prasad hai." I said, "How can a cake be prasad?" So I started questioning, and I was very irritable, and I was very upset and very dispirited and dejected actually, because I thought, "Ye Guruji kya kar rahe hain?" Pehle ek surgery, then dusri surgery, and I was on intravenous antibiotics and so on and so forth. So it was quite a mess in the hospital. I said, "Nahi, main cake to khaungi nahi, and tomorrow's my MRI. And tomorrow anyway I'll be on an empty stomach, but I'm just not inclined towards eating this cake." So they said, "Nahi, actually prasad hai." I saw the cake and it said Jai Guruji on the cake, the chocolate cake. So I said, "How can you have Jai Guruji written on it?" कहते पता नहीं मैसेज था, हमने लिखवा दिया, get was soon कह रहे थे केक वाले को, तो उसमें कहते कहते हमारे मुंह से जय गुरुजी लिख के, then we got this blessed and ये प्रसाद हो गया आपका. So meanwhile the doctor walks in and the doctor said, "ये क्या है केक जय गुरुजी?" So the Sangat started doing satsang with the doctor. They said, "आप कर लो अपने टेस्ट, कुछ नहीं निकलेगा." That was the final word. They had done a lot of satsang for an hour speaking about Guruji. And then they just said that आप जितने मर्जी टेस्ट कर दो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला. अनीता की MRI रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी. They said, "Well, it's medicine against you can say spirituality or medication. It's one against the other, but we have to still do the MRI and we still have to go through the procedure, which is the gallbladder removal as well as the clearing of the bowel duct." So anyway, this was the first time I got some hope. Faith is very fragile. Even though I've been healed of skin cancer, asthma, cold in the heart, still faith is such that it wavers. So during that period, being in hospital for 2 weeks, I was very dejected and I was questioning Guruji's love for me, and I felt that he had withdrawn himself, or I was not worthy of his love. A lot of negative thoughts come. Anyway, when you're a patient, you become very sensitive, and negativity does, permeate you. So I was feeling very neglected by him. So on doing this satsang, there was a rose fragrance, as we're all familiar with. So, and then I had the cake. And this time I had it with a lot of hope and promise. I thought, yeah, ye ho sakta hai, ye mera prasad. Guruji has come here today. And he's telling me to eat the cake. So I ate it. And then the MRI was the following day. By this time I was quite hopeful. Ki kuch nahi niklega. Though it was very hard to believe because the ultrasound had already confirmed. And 3 times it was taken. At 3 different occasions. Because they had to see now how bad is the gallbladder, how much blockage there is, etc., etc. So, in the end, we had the MRI where the Sangat again accompanied me, and my sister and my Jija, they accompanied me. And my sister was holding my head in the CAT scan. It's a very claustrophobic experience. So she was holding my head because I was extremely sensitive. And I said, "I can't go through this. It resembles a coffin, this CAT scan. I feel like I'm dying." So it was a bit of a dramatic experience. So they were sliding me through the machine, and she held my head, and both her hands had rose fragrance. Guruji ki jo khushboo aati hai, dono haathon mein se aa rahi thi. So I was convinced कि कुछ नहीं निकलना, everything will be clear. Meanwhile, Guruji had given me a very clear message. आपको मालूम होगा कि MRI में 40 मिनट लग जाते हैं कभी-कभी. It's quite a long procedure. काफी लंबा होता है. लेते जाते हैं वो. And during that time, Guruji बहुत plainly मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा कि there is something that all of us need to be aware of. कि जब change आता है life में, any kind of ordeal or predicament or difficulty that we come through,
It comes to teach us something about ourselves, primarily. And this change that came about in my life came basically to change me from within. So every change redefines us, and we need to reevaluate our lives. मुझे याद था जब गुरुजी थे फिजिकल में, उन्होंने कहा था कि शिव पुराण पढ़ाकर, शब्द सुनाकर घर में आनंद ले और जाप किया कर ओम नमः शिवाय का. Since I moved to England, I'd withdrawn myself from Shiv Puran, Satsang, Shabad and Jap. I was not really, जैसे गुरुजी कहते थे कि अच्छे आओ मंदिर, the satsang is better, sit in a rest level, आनंद level. So, वो आनंद, because I could not relate anymore in England, I had withdrawn myself from the entire philosophy or his entire concept which he had imparted to us. So I felt very lost, very, very lost. I was not connected. I was not really connected to Guruji spiritually for a long time. Since I moved to England, as I say. So long time means for the past 6-7 months. So I was always complaining. So he used to say that attitude of gratitude बहुत जरूरी है. Count your blessings. So look at the glass half full, not empty. Be grateful. Start being positive. Now, for me, this whole message during the satsang awakened me from my slumber. And when I came back home after being discharged, of course, miraculously, the doctor entered my room the following day in the hospital, and he said, "Aapki MRI clear aayi hai," which again, आपके गुरुजी ने हमारी मेडिसिन फेल कर दी. आपका 100% स्टोन्स थे गो ब्लैडर में, आपका 100% सर्जरी होनी थी, गो ब्लैडर भी ब्लॉक था और फ्लश थी लिवर में. समझ नहीं आई हमें, लेकिन जो भी है, अब आप नेक्स्ट टाइम जब मंदिर जाएंगे तो हमें प्लीज ले जाइए. So, non-believers become believers because they need to see something, they need something tangible. हम सबको tangible evidence चाहिए होते हैं. And so, I am an embodiment of this supremacy, his divinity. I have truly lived previously and I'm still living in his blessings. Miracles word जो है बहुत ही, it belittles him. गुरुजी कहते एकदम एक बारी नाम ना जुड़ जाओ, बहुत मारा टाइम आ रहा है. मारा टाइम क्यों आ रहा है? Because as we all know, the tsunamis are hitting the earth and earthquakes. There's a lot of imbalance in the ecological system. There's a lot of imbalance within us as people. I mean, we all know what we're talking about. There's no peace now in society. Guruji कहते होते थे कि आजकल पैसा ही रब है, and we know how true that is. इसके पास पैसा वही रब है, to put it very simply, कि पैसों वाली की पूजा होती है. So Guruji used to say कि किसी को पता ही नहीं कि रब कौन है, कि रब की है. And मैं इस करके आया समझान मुझसे. मैं आया थोड़ी लाइफ ठीक करने वास्ते, तो मैं समझान मुझसे and to get you back onto the path of truth. What we came here for, we all forget very conveniently that we are here because we're part of our journey, part of a spiritual journey. And yes, enjoy the material, enjoy and celebrate life, but not to forget that we have come from the source and we shall go back to the source. And while we're here, we must remain connected for a peaceful and happy, truly happy and giving life. We must learn to give, we must learn to love, and we must learn to live in the manner which are aligned with his laws. And so he said, I have come here to uplift humanity. Therefore, imbibe my truth. Assimilate what matters. Baki sab kuch aise hi reh jana hai. Whatever we accumulate in terms of our material possessions or wealth, aise hi sab kuch reh jana hai. Kuch nahi jana naal. Sirf ek naam jana hai. Mera naam. Fir naam de naal jud jao. और देखो आनंद लो, फिर देखो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी. So yes, the journey goes on from this moment onwards too. This is my latest satsang.
and I'm here for another 10 days or so. And then I go back to England. England में भी गुरुजी ने सत्संग शुरू करवा दिया है. लंदन में तो हो ही रहे थे. मैनचेस्टर ऐसी जगह जहाँ Indians are very close knit. It's a very close knit community. But to embrace spirituality, to embrace Guruji is a challenge for people who have been born and raised in England. Very difficult. But yet, with Guruji's blessings, nothing is difficult because he facilitates everything. He gives meaning to everything. And we are doing satsang there as well as satsang in New York, Kuwait, the world over, you name it. And this is his grace. His life is spreading by leaps and bounds. His following is growing. And why is that? Because people are understanding that without a Guruji, Hamari Guruji, life is tough. It's not easy. And जो struggles आती हैं, जो difficulties आती हैं, वो गुरुजी easy करते रहते हैं. जय गुरुजी. जय गुरुजी. सारी संगत को मेरा सत प्रणाम. मैं सविता भाटिया, गुरुजी की संगत. कुछ गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ. गुरुजी को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है. जितनी हमारे शरीर के रोम में अगर इतनी जीवे भी हो जाए तो हम शायद गुरुजी का वो खान नहीं कर सकते. मैं कोशिश करूंगी कि जो कृपा मेरे ऊपर गुरुजी की हुई है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, जो गुरुजी से सुना है, वो सब आप लोगों तक पहुँचाऊं. वो शब्द, वो चीज मैं नहीं ला पाऊंगी जो गुरुजी के साथ हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छा आपको बताऊं. आज से 9 साल पहले हमें मौका मिला गुरुजी के दर्शन करने का. वो मेरे हस्बैंड जो थे वो कहते थे कि क्या गुरुओं के चक्कर में तो पड़ रही है, ये तो टीवी में रोज देखती नहीं है कि ये क्या होता है, सबको कोई जरूरत नहीं है जाने की. लेकिन मेरा मन ऐसे खिंचाव हो रहा था कि मुझे जाना है. मैं और मेरी बेटी ने जाना शुरू किया, गुरुजी के दर्शन किए और मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई और मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं. एक क्षण के लिए भी मेरी पलक वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती थी. जितनी टाइम मैं बैठी रही, लंगर करती रही, मैं एक तक गुरुजी को देखती रही. और जब गुरुजी देखते थे तो हमसे सहन नहीं होता था, हम इधर उधर मुँह कर लेते थे. इस तरह समझे 1 साल हमें और मेरी बेटी गुरुजी के पास जाते रहे. गुरुजी कैसे बुलाते हैं, मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं थी, अकेले मैं ड्राइव नहीं कर सकती. मैं कहाँ ऑटो करके जाती थी, रात को अपनी मदर के घर में सोती थी, सुबह वहाँ से बस या ऑटो पकड़ के अपने घर में आती थी. और मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे थर्सडे को जाना है. उस दिन जैसे लगता था कि मेरे अंदर खुशियों के भंडार बन गए हैं. गुरुजी ने जब देखा कि इतनी कृपा हुई है तो मेरे ब्रदर जनकपुरी से शिफ्ट होके मेरे बिल्कुल घर के सामने आ गए. और मुझे इतना आराम हो गया कि मैं करोलबाग ऑटो में जाती थी और रात को मैं फिर अपने घर आ जाती थी. तो गुरुजी की कृपा यहाँ से शुरू हुई कि मेरा उन्होंने रास्ता बहुत आसान कर दिया अपने पास बुलाने का. धीरे धीरे मेरे अंकल को लगने लगा कि ये जाती है, ऐसा कुछ तो होगा. एक दिन खुद ही कहते हैं कि चल मैं भी चलता हूँ, आज तुम इतने परेशान होके जाते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा. उसके बाद मेरे अंकल ने भी जाना शुरू किया और हमें और आराम हो गया कि हम घर से जाते थे, अपने टाइम से जाते थे और गुरुजी के भेजने के टाइम से हम घर आते थे. जाने के बाद उनका इतना कनेक्शन जुड़ा गुरुजी के साथ कि हमें लगा कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं. वो दिन रात सोते उठते जागते गुरुजी 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 करते थे. कृपा थी, घर में शांति थी, हर चीज पॉजिटिव होने लगी, हर चीज बड़ी स्मूथली सब कुछ होने लगा. तो ऐसा लगता था कुछ तो है. इतनी शांति, इतनी खुशी, जो चीज मन में सोचते थे वो पूरी हो जाती थी. और पहले ऐसा होता था कि जो चीज सोचते रहो करने की कोशिश करो तब भी नहीं होती थी. तो ये फर्क था. गुरुजी के पास जाएगा एक सुकून, एक मन की शांति हमें बहुत मिलने लग गई थी. फिर भी हमारे मन में ये था कि 4-4.25 साल हो गए अभी तक हमारे गुरुजी से कभी बात नहीं हुई. फिर गुरुजी का हुक्म आया, बड़े मंदिर आना शुरू करो. सोमवार सत्संग होता था, थोड़ी सेवा होती थी, प्रसाद मिलता था. फिर हमने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया. गुरुजी दर्शनों में आते थे, बेटी के मेरे सारे मैसेज देते थे, सारे काम पूरे होते थे. 2 साल पहले ही मेरी बेटी के ड्रीम में आकर गुरुजी ने कहा कि तेरी माँ मेरा बड़ा सिर खांदी है, उनको मैं तेरा ब्याह करा दूंगा. अब मेरी कभी गुरुजी से बात नहीं, लेकिन मन में मैं जरूर सोचती थी, गुरुजी मैं आपके पास आती हूँ, अब आपकी शरण में हूँ, ये बेटी अब आपकी है और अब आपने इसकी शादी करनी, मुझे कुछ नहीं पता. और देखिए गुरुजी तो हर चीज भगवान है, वो तो हर चीज जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं.
गुरु जी कहते हैं अगर आपको मुझे आके बताना है कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, तो फिर मैं भगवान कैसा हुआ? भगवान को तो हर चीज मालूम है, जो होता है उनकी मर्जी से ही होता है, तो उनको क्या बताना। लेकिन हम नए थे और हर एक के मन में भी ये होता है कि हम गुरु जी से कुछ बोले, कुछ बताए। तो मैंने कहा नहीं बेटे, मेरी तो कभी गुरु जी से आज तक बात नहीं हुई, लेकिन मन में मैं जरूर सोचती हूँ। तो 2 साल पहले ही संगत में कई लोगों को ड्रीम आने शुरू हो गए कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी करा रहे हैं गुरुजी। अब मन में शांति थी कि जॉब कराएंगे गुरुजी कराएंगे। इसके बाद बेटी का एडमिशन था एमकॉम में, मैं बीकॉम किया, इसने एमकॉम के लिए फॉर्म भरा और बीएड के लिए फॉर्म भरा। फिर गुरुजी इसके दर्शनों में आते हैं और बोलते हैं कि बीएड छोड़ दे, बीएड नहीं करनी तो एमकॉम कर। तो इसने बीएड के लिए एंट्रेंस ही नहीं दिया, एमकॉम का एंट्रेंस दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही लिस्ट लगती है, जब वो लिस्ट लगनी थी तो हम गए, उसमें इसका नाम ही नहीं था। तो ये बार बार के ऐसा हो ही नहीं सकता। जब गुरुजी ने मुझे कहा कि एमकॉम करना है तो ये मेरा नाम नहीं हुआ, ये कभी हो ही नहीं सकता। हम फिर भी जाके पता करा, 2-3 बार गए, फोन किया, तो वो थोड़ा रूड भी बोलने लगे कि एक मैडम आपको एक बार बोल दिया कि एक ही लिस्ट लगती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो लिस्ट लग चुकी है, आपकी बेटी का नाम नहीं है और सेकंड लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन गुरुजी के वचन थे, इसलिए हमारे मन में था कि जरूर होगा। तो एक दिन मेरी बेटी कहती है मामा आज चले जाओ सिर्फ बस, अगर आज नहीं ना हुआ तो फिर मैं कुछ और देखूंगी, बैंक के पेपर दूंगी या कुछ भी करूंगी। अब वो तो बीएड तो हो नहीं सकता दोबारा, फिर कुछ देखूंगी, आज प्लीज आज चले जाओ। तो मेरा ठीक है, हम भी गुरुजी का नाम लेके निकल गए घर से। जैसे हम एंटर किए उस रूम के बाहर पहुंचे तो वो कुछ बोर्ड वगैरह बाहर रखे कुछ स्लिप चिपकाने लगे थे। तो हमने पूछा कि ऐसे ऐसे एमकॉम की लिस्ट का बताइए, क्या कभी लगेगी? तो मैडम वही लगा रहा हूँ। कहते लाइफ में पहली बार मैंने देखा है कि एमकॉम के लिए सेकंड लिस्ट लगी है, कभी भी नहीं लगती। और जैसे उन्होंने लिस्ट लगाई मैंने पढ़ा, सबसे ऊपर मेरी बेटी का नाम था। मैंने उसको फोन किया घर में, मैंने कहा बेटे तेरा हो गया, तेरा सेकंड लिस्ट लगी और सबसे ऊपर तेरा ही नाम है, निधि भाटिया। तो वो बड़ी खुश हो रही है। तो मैंने कहा नहीं था मम्मी आपको कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं और उन्होंने बोला तो होना ही है। तो गुरुजी कहते थे मेरे ड्रीम नहीं होते, ये मैं साक्षात आता हूँ और आपसे बात करता हूँ। तो जो गुरुजी के वचन है, गुरुजी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता है, वो पूरा होता है। तो मेरी बेटी का एमकॉम में एडमिशन भी हुआ। अब 2 साल पहले जो गुरुजी ने दिखाया था, तो एक दिन हम मंदिर में बैठे थे, सेवा चल रही थी, कोई फंक्शन था, गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन था। तो काफी दिन पहले मंदिर खोल देते हैं सेवा के लिए। शाम को 6 बजे का टाइम था, तो 6 बजे मंदिर खाली करना था संगत को। उस दिन गुरुजी का हुक्म था कि 6 बजे मंदिर खाली कर देना है। तो हम कह रहे हैं, और मोर बहुत बोल रहे थे और कहते हैं कि पक्षियों को, जानवरों को, इन लोगों को ईश्वर के दर्शन होने शुरू होते हैं और ये बताना इंडिकेशन देते हैं। तो इसलिए मोर बोल रहे थे। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि सिस्टर आज तो लगता है गुरुजी आएंगे। कहते नहीं 6 बजे और इतनी लेबर है, इतनी संगत है, गुरुजी ऐसे नहीं आते। गुरुजी आते आज तो 12-1 बजे आते हैं, इस समय तो मतलब ही नहीं आने का। तो जैसे ही 6 बजे हम लोग गेट से बाहर हो गए तो मेरे अंकल कहते हैं कि मैं वॉशरूम होके आता हूँ, आप 2 मिनट वेट करो बाहर। मैं और मेरी सिस्टर दोनों बाहर खड़े गेट के, कोई भी नहीं था उस टाइम गेट के बाहर। तो अब 6 बजे से तो संगत में निकलना शुरू करना था, लेकिन हम एग्जैक्ट 6 बजे गेट पे थे। तो मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी, तो वो गाड़ी गुरुजी की नहीं थी। तो मैंने सिर्फ ये वर्ड बोले, मैंने कहा गुरुजी की ये जगह है, यहाँ पर किसी को गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यहाँ पर अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करनी चाहिए। तो ये पता नहीं किसने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। जैसे ही दरवाजा खुला पिछला, उसमें से गुरुजी, और सबसे आगे मैं खड़ी, बिल्कुल दरवाजे के साथ टच हो रही थी मैं और मेरी सिस्टर। हम लोगों ने वही मत्था टेक दिया गुरुजी को। तो जो सेवादार थे उनको फोन हो गया था, हम अंदर से भागते हुए आए। तो मुझे कहते हैं अब आपका मत्था टिक गया, आप अंदर नहीं आओगे, अब 6 बजे छुट्टी आपकी। तो गुरुजी कहते हैं आन दे। हम मंदिर के अंदर चले गए। उसके बाद गुरुजी ने पूरे मंदिर को देखा। फिर एक आंटी ने कहा कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे दीजिए, हमें आज मंडे है। तो गुरुजी कहते ठीक है। लॉन के अंदर खूब पानी दिया गया, गर्मी थी, उसको एक प्लास्टिक की चेयर रखी गई, उस पर गुरुजी बैठे। हमारे गुरुजी इतने भोले भाले शिव भगवान कि उनको वो कुछ भी नहीं है कि मेरे को ये जो संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो कहते जो मेरी संगत से प्यार करता है समझो मेरे से प्यार करता है, क्योंकि मैं हर संगत के बीच में हूँ और मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे पास आ नहीं सकता। असली परिवार यही है हमारा।
कहते दूसरे रिश्तेदार तो तुम्हारे कर्जे हैं, कि तुमने पिछले जन्म में कर्जे लिए हुए हैं, कोई किसी का बच्चा बन गया, कोई बेटी, कोई माँ बाप, कोई बेटा, कोई हस्बैंड, तो ये तो तुम्हारे मजबूरी के रिश्ते हैं, लेकिन असली परिवार जो मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारा असली परिवार है। उसके बाद गुरुजी बैठे, प्रसाद की लाइन लगी, और देखिए मेरी किस्मत थी सबसे पहले दूसरा नंबर मेरा। हमें गुरुजी के हाथ से प्रसाद मिला, उसके बाद साइड में हो गए तो वो सेवादार कहते हैं आंटी आपको प्रसाद मिल गया, अब आपकी छुट्टी, अब आप जाइए। मुझे फिर बड़ा दुख लगा, मैं क्या मैं उससे पीछे ही खड़ी हो जाती, कम से कम खड़ी तो रहती, गुरुजी के दर्शन तो कर लेती। अब मैं सबसे पहले खड़ी होगी और मेरी तो छुट्टी भी होगी। फिर गुरुजी ने हुक्म दिया कि नहीं, सारी संगत को बिठाओ, चाय प्रसाद बनेगा, सारी संगत चाय प्रसाद पी के फिर जाएगी। हम लोग बैठ गए चाय प्रसाद के लिए। चाय प्रसाद मिला, काफी संगत को फोन हो गए, संगत करते करते बहुत बढ़ गई। गुरुजी ने पूरी संगत को प्रसाद दिया। हम चाय प्रसाद की वेट कर रहे थे, इतने में एक अंकल आते हैं, तो मेरे अंकल को बोलता है कि भाटी अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं। अंकल जब गुरुजी के पास जाते हैं तो मेरे मन में एकदम आया कि अभी आधा घंटा पहले ही अंकल से बात हुई, किसी अंकल की। वो कहते हैं जी मुझे तो 1 साल हो गया गुरुजी के पास आते, अभी तक गुरुजी से मेरी बात ही नहीं हुई। कहते हैं आपको 1 साल हुआ है? दूसरे अंकल बोलते हैं मुझे तो 4 साल हो गया। मेरे अंकल ने बोला मुझे तो 4 साल हो गए आपके, मेरी आज तक गुरुजी से बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे काम सारे हो रहे हैं, गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी मेरे सपने में आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। तो उसी टाइम अभी ये कहने की देर थी और गुरुजी ने मेरे अंकल को बुला लिया। जी मेरे अंकल से पूछा तेरा नाम की है, तू रहना कितने में? अंकल ने बोला मैं रोहिणी में रहता हूँ। अच्छा तेरे घर के पीछे गुरुद्वारा है, अगे मॉल बने हुए हैं? अंकल ने कहा हाँ। अंकल ने मन में सोचा कि मैं सोचा था गुरुजी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इनको तो हर चीज पता है। फिर पूछा कि तू नौकरी करना है? मैंने कहा मैंने VRS लिया। कहते कमले और रखे ने, क्यों VRS लिख थी? अंकल ने बोला मेरी ट्रांसफर बड़ी दूर कर रहे थे और इस एज में मैं जाना नहीं चाहता था। गुरुजी ने गुस्सा किया कि VRS क्यों लिया है। फिर बोला तेरी आंटी भी आई है, चलो मैं बुला। फिर अंकल मुझे बुलाने आए। आज मैं तो कांपने लग गई खुशी से, क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना था, इतना तेज कि गुरुजी के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। अगर गुरुजी आपसे आपका नाम पूछेंगे आप भूल जाओगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाओगे, सब कुछ ब्लैंक हो जाते हो। लेकिन वो गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, वो गुरुजी हमें शक्ति देते हैं कि हम उनसे बात कर सकें, अदरवाइज हम गुरुजी से बात भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, क्या नौकरी करनी है, नहीं कर दी। फिर पूछा बड़ी बेटी कितने है? मैं कहा गुरुजी वो USA में है। अच्छा की शादी कहाँ हुई है, उसके हस्बैंड क्या करते हैं, USA में कहाँ रहती है, उसने इंडिया वापस कब आना है? और आप मानेंगे उसके इंडिया वापस आने में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि उसको ये कहा कि अगर मैं वापस आऊंगी तो मेरी स्टैंप लगेगी या नहीं लगेगी। तो चिंता में वो डर के मारे इंडिया नहीं आ रही थी, और मन बहुत था आने का कि मेरे को आना है और मैं वापस आ पाऊंगी हस्बैंड के पास के नहीं। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ इतना करके हमने इंडिया कब वापस आना है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि आप उसके ड्रीम में आए थे, तो आपने उसको ये बोला था कि तुम आंधी भी जल्दी से अच्छे, तो हम वापस आंधी भी जल्दी है। तो गुरुजी हंसने लग गए, और उसके बाद आप बिलीव करो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो इंडिया आई, कैंप लगवाने गई, बच्चे को लेके गई, घर से थोड़ा पानी थोड़ा खाने का सामान बोल के गई, मम्मी मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे दोपहर के बाद शाम भी हो जाए, कितना टाइम लगता है हमें अम्बेसी में, हम जा रहे हैं। और जब ये अम्बेसी के अंदर गई तो इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। एक अंकल आए कहीं से, एक खाली विंडो थी, पूरी लाइन में से सिर्फ इसको कहते मैडम आप इस लाइन में आ जाइए। ये उस लाइन में गई, उन्होंने बात करी, पूछा, फेस देखा और स्टैंप लगा दी। तो कहती मम्मी मैं 15 मिनट में वापस आ गई बाहर, जहाँ की मैं सोच के आई थी शाम हो जाएगी शायद, और लगेगा भी तो नहीं लगेगा। लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, उनकी संगत VIP होती है, जहाँ पर भी जाती है कुछ सीट VIP होती है, वो गुरुजी की संगत होती है, उनके काम अच्छे होते हैं। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो हो सकता है ना भी हो, हम अपना दिमाग लगा के सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जो गुरुजी की इच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो चालू है। उसके बाद गुरुजी ने पूछा आपकी छोटी बेटी क्या करती है? मैंने कहा गुरुजी वो नौकरी करती है। कहाँ करती है? मैंने कहा गुरुजी जनपथ में कर रही है। कहते जनपथ पे कर रही है, सोनिया गांधी के पास कर रही है। वो गुरुजी ने माहौल इतना लाइट बना दिया कि मैं उनसे बात कर सकती, अदरवाइज मेरी औकात नहीं कि मैं उनके सामने आत्महत्या कर सकूं। उसके बाद 22 उस दिन मेरी बेटी मंदिर में आई थी ऑफिस से,
कि मम्मा मैं 6 बजे तक तो मंदिर पहुंचती हूँ और 6 बजे मंदिर बंद हो जाएगा तो मैं फिर आज नहीं आती। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, आप गुड़गांव में तो सीधा घर ही चले जाना, आप मत आना मंदिर। फिर गुरुजी ने बोला जेठा जानते हो? पूछा हाँ जी गुरुजी, जेठा बुलाओ। हम जेठा अंकल को बुला के लाए। गुरुजी ने कहा कि इसको मैंने 3 बार रियलाइज किया और गुरुजी ने उनसे बात करी जेठा अंकल से और फिर बोला कि जेठा अंकल का बेटा और आपकी बेटी दोनों शादी कर दो, जुलाई के महीने में कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना, 25-25 लोग बुलाने हैं और शादी करनी है। हमने अच्छा जी कहा और गुरुजी ने हमें साइड में बिठा दिया कि बैठ के आप अपनी सलाह कर लो। उस दिन 12:30 बजे तक हम मंदिर में बैठे रहे, सारी संगत चली गई, हम 7-8 लोग थे सिर्फ, हम बैठे रहे और गुरुजी पूरे मंदिर में घूम रहे हैं और हम बैठे हैं और ऐसा आनंद कि हम शिव लोक में बैठे हैं, शिव जी हमारे सामने हैं, हमारे बच्चों की शादी शिव जी ने खुद कराई है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। तो उसके बाद जब गुरुजी जाने लगे, हम बाहर गेट तक छोड़ने गए, गुरुजी इतने आराम से खड़े हुए, हमने उनके चरणों को चूमा, ब्लेसिंग्स ली। नहीं तो आप देखिए कोई छोटे से छोटा गुरु भी होगा, वो अपने आसपास इतना एक कवर करके रखेगा कि कोई भी उसको टच ना कर सके, चरणों को क्या उसकी बॉडी को भी टच ना करे। लेकिन हमारे गुरुजी इतने अच्छे, हम इतने सौभाग्यशाली है कि आज हम उनकी शरण में हैं। उन्होंने हमें मौका दिया, उनको छुआ हमने। उसके बाद गुरुजी को गाड़ी में बिठाया, उसके बाद हम लोग घर आए और इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया उस दिन और मेरे हस्बैंड को 2 बार चाय प्रसाद पिलाया अपने पास बिठा के। कितना कुछ हमारा उन्होंने स्टोर किया हमें नहीं मालूम। और 2 दिन तक मैं एसी के सामने बैठी रही, मेरी बॉडी में से हीट निकल रही थी और दिमाग मेरा बिल्कुल ब्लैंक था, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी ब्रदर और मम्मी मेरे घर के पास शिफ्ट हो गए थे। घर के पास से अगर मैं अपने घर से टाइम देख के चलूँ 3 मिनट के बाद मैं उनके घर में रहती थी, इतनी पास था घर। तो मैं उनके पास भी नहीं जा सकी क्योंकि मेरे को मेरा शरीर था लेकिन मैं उसमें नहीं थी। 2 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ कि अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने जाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर को गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी फिक्स कर दिया है। तो कहते आज बता रही है, मैंने कहा आज बता रही हूँ क्योंकि 2 दिन में अपने में थी ही नहीं, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। उसके बाद थोड़े दिन बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने से एक दिन पहले जब संगत थी तो हम अंपायर स्टेट गए। उस दिन गुरुजी ने लड्डू बांटे और बोला कि मैं काम करता हूँ, तुम अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरा कर दो। उस दिन सबने हमें मुबारक दे दी, मेरी बेटी को प्यार किया कि गुरुजी ने तो आज सब कुछ तेरा कर दिया और जो दुनियादारी का दिखावा है वो रह गया। फिर हमने 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन बच्चों की सुबह शादी करी दिन में और शाम को गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए मंदिर गए। गुरुजी तो हर संगत के साथ है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी है। अगर गुरुजी की संगत लाखों में है तो लाखों ही गुरुजी उनके साथ बैठे हैं। ये कितनी बार गुरुजी ने हमें दिखाया, महसूस कराया। गुरुजी ने कहा था कि मैं ब्याह पे आऊंगा, प्रेगनेंस भी बहुत आई, बहुत अच्छा फील भी हुआ। फिर मेरी बेटी ने जब मेहंदी लगाई तो हमारे पड़ोस में एक बेटी ने फोटो खींची और मेरे उस दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी शादी वाले दिन, तो मेरे अंकल को दिखा के कहती अंकल कितनी अच्छी फोटो आई दीदी की मेहंदी की, तो इसको जाके मैं अभी ना कंप्यूटर में डाल के आपको सीडी बना के दूंगी। वो जस्ट पीछे गई है और जब उसने फोटो डाली है तो गुरु इसकी जो मेहंदी थी, मेहंदी वाले हाथ गायब हो गई, वहाँ पर गुरु जी की लाल चले वाली फोटो आ गई। तो उसने कहा कि आप आंटी हमेशा कहते थे कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं, ईश्वर है, भगवान है, लेकिन आज तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि ये हुआ कैसे। अभी तो मैं ऊपर से फोटो खींच के आ रही हूँ, मेहंदी की फोटो इसमें है ही नहीं और उसके बदले गुरु जी की फोटो है। तो गुरु जी ने बताया कि देख मैं प्रेजेंट था, मैं जब बेटी को मेहंदी लग रही थी, शादी की रस्में हो रही थी, शादी हो रही थी, तो गुरु जी हमारे साथ थे। शादी हुई बच्चों की, अच्छा लगा बहुत। अब गुरु जी ने पहले हमारी जिम्मेवारी पूरी करी। गुरु जी कहते बारी बारी सब कुछ देना हुआ। उसके बाद गुरु अंकल को ड्रीम आता है कि वो मर गए हैं, यमदूत उनको हथकड़ियां लगा के लेके जा रहे हैं। इतने में गुरु जी व्हाइट चोले में आते हैं, अपने हाथ से ऐसे प्रकाश करते हैं और अंकल उठ के बैठ जाते हैं। अंकल सुबह उठे हैं, मुझे कहते हैं आंटी कोई प्रॉब्लम तो आने वाली है मेरे साथ, तो गुरु जी ने मुझे बचा लिया। इसके बाद थोड़े से दिन निकले होंगे कि मुंह में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डेंटिस्ट अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो एक छाला सा नजर आया तो उसने एक जेल दी कि ये आप लगाते रहो।
तो अभी नेक्स्ट विजिट पे जब अंकल गए तो कहते हैं ठीक ही नहीं हुआ, ये तो ऐसे कैसे गया, दर्द भी कर रहा है। तो उसने कहा कि आप देर मत करो, इसकी बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कराई तो वो कैंसर था। तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, विश्वास भी जैसे डगमगाने लगता कि अब तो गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा। हम इंसान, हम तो हमारी सोच तो वहीं तक कि इस दीवार तक, इस दीवार के आगे क्या हमें कुछ नहीं मालूम, अगले पल क्या हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम अपना दिमाग को कितने बरस आगे तक ले जाते चलाने के लिए, बड़ी परेशानी हुई। फिर उसी डॉक्टर ने हमें डॉक्टर बताया कि आप, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके पास चलेगा। जब हम उसके पास गए तो उसने कहा ठीक है 9 घंटे ऑपरेशन चलेगा, 5 दिन रहना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, तो आप एडमिट हो जाओ जल्दी से जल्दी। तो हमने सोचा कि 1-2 डॉक्टर की ओपिनियन ले लेनी चाहिए। हम ऑल इंडिया में भी गए, फिर हम राजीव कैंसर हॉस्पिटल हमारे घर के पास था, हम वहाँ भी चले गए। वहाँ पर एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने देखा और मेरी बेटी को बोला कि लास्ट स्टेज है, तो 10% चांसेस है बचने के, अगर बच भी जाएंगे तो ये कुछ खा नहीं पाएंगे क्योंकि उनका गाल काट देंगे, चेस्ट से इनकी बोन लेके लगाएंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, तो ये कुछ खा नहीं पाएंगे और 3 महीने इनको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ेगा, उसके बाद भी उनको गारंटी नहीं लेते। तो हम बहुत टेंशन हो गई, हमें क्या करें। फिर गुरुजी रात को ड्रीम में आते हैं अंकल के और कहते हैं डॉक्टर कंजरा ने भी करना है, जो करना है मैं करना है, तो जा जितना मर्जी ऑपरेशन करवा ला है। तो अंकल को डॉक्टर कहते हैं अब तो क्या मुझे मोची के पास भी ले जाएगी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करना है गुरुजी ने ही करना है। फिर हम जो पहला डॉक्टर था उसके पास ही गए, उसने कहा ठीक है आप कल एडमिट हो जाओ, फिर तो ऑपरेशन हो जाएगा। एडमिट हो गए। सुबह 4 बजे का टाइम था, 4:30 का, नींद आ नहीं रही थी क्योंकि 6:30-7 बजे ऑपरेशन होना था। जितना मर्जी हम पे सरेंडर कर दिया, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा आदमी घबरा तो जाता ही है। हमारे साथ भी यही हुआ। तो अंकल बोलते था जरा टीवी लगा दो, 10 मिनट टीवी देखते हैं, शायद मन इधर उधर हो जाए। जैसे मैंने टीवी ऑन किया रूम का, उसमें कोई भक्ति चैनल लगा हुआ था, तो उसमें कोई प्रवचन कर रहा था। उसने लास्ट की सिर्फ 2 लाइनें बोली और नमस्ते करके चला गया। वो गुरुजी का मैसेज था हमारे लिए कि उसने सिर्फ ये वर्ड हमें सुनाए, अगर आप बीमार हैं और आप हॉस्पिटल में हैं, आपके कोई गुरु हैं, आप उन पे 100% विश्वास रखो, आप 100% क्योर हो। जैसे किसी डॉक्टर को हमें फेस होता है, वो हमें एक बटन भी चूसने के लिए दे देता है तो हम ठीक हो जाते हैं। तो ये मैसेज है कि विश्वास का बेड़ा पार है और आपके गुरुजी पे आप विश्वास रखते हो तो आप 100% क्योर हो। तो जय गुरुजी नमस्ते करके वो चला गया। तो हम कहते ले आंटी मेरे को तो मैसेज मिल गया गुरुजी का, अब मेरे को कुछ नहीं होगा। और जब ऑपरेशन टेबल पे अंकल लेटे तो कह रहे मेरे साथ गुरुजी थे। जब ऑपरेशन खत्म हुआ मुझे होश आया, तब भी गुरुजी मेरे सामने खड़े थे और मैं गुरुजी का पाठ कर रहा था। पूरा टाइम गुरुजी इनके पास कर रहे हैं। पूरे 9 घंटे ऑपरेशन चला। फिर एक दिन इनको आईसीयू में या रिकवरी रूम में रखा, अगले दिन ये बाहर आए, फिर 5 दिन के बाद इनको छुट्टी हो गई। अब छुट्टी हुई, इतनी बड़ी बीमारी, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आई, रेडिएशन भी होनी थी। रेडिएशन का जब टाइम आया तो हम राजीव गांधी गए क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर अच्छी होती है, उसने बोला कि आप वहीं से कराना। तो जब हमारी टर्न आई डॉक्टर ने देखा तो कहने लगा नहीं जी आपकी तो रेडिएशन हो ही नहीं सकती क्योंकि आपको तो मुंह ही नहीं खुल रहा, क्योंकि सारी ग्राफ्टिंग हुई थी, थाई से लेके स्किन लगाई थी अंदर गाल के, पीठ से कान से लेके पूरे चिन तक पूरा गाल काटा था, तो वो मुंह खुल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला ऐसे करो पहले आप फिजियोथेरेपी वाले के पास जाओ और फिजियो कराओ, थोड़ा मुंह खुलेगा, उसके बाद आपकी रेडिएशन लेंगे, नहीं तो आपका मुंह ऐसे ही रह जाएगा। अब हमने सोचा चलो अब 1 महीना और लग जाएगा। सुबह 4-4:30 का टाइम था, मैं और अंकल जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे। इतने मेरे अंकल की पीठ थी मेरी तरफ, वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ मुंह घुमाते हैं और चिल्ला के उसके बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी ऑपरेशन से हटिया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ, कहते कुछ नहीं गुरुजी आए हैं और इतनी लंबी रॉड लेके मेरे मुंह में डाल के घुमा दी है और मेरे को बहुत दर्द हुई है। और फिर एकदम देखा हमने तो अंकल का मुंह खुल गया। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, देखो मुंह तो खुल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप फिजियो कराते रहो 7 देगा क्योंकि वो जरूरी है और आप कल से आपके रेडिएशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं, हम कौन है और डॉक्टर कौन है। डॉक्टर तो एक जरिया है, हमारा कर्जा है जो हमने पिछले दिनों में लिया है देना है, और फिर 10% गुरुजी भुगताते हैं, 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। वो 10% भी जो भुगतने की हमारी ताकत है वो गुरुजी हमें देते हैं। हमारे बस में नहीं है कि हम वो 10% भी भुगत सकें।
वो गुरुजी दिख पाते हैं। जैसे एक भगत जब भी जाता था उसको गुरुजी का दर्शन होते थे। उसको परछाई में धूप में भी 4 पैर दिखते थे, 2 उसके 2 गुरुजी के। तो वो बड़ा खुश होता था कि गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं। एक टाइम